is basically बेटा ये spring balance या ये force constant के लिए है. Just remove the hangers. They have not removed the hangers. Please remove the hanger because unnecessarily permanent वो आ जाएगा इसके अंदर. Even those places वो हाँ तो पूरा 250 ग्राम का hanger is all weights are there. So we cannot leave the springs with the load. नहीं तो permanent deformity हो जाएगा. ये उतार दो निकाल दो बाहर. Yes. So this is one experiment. अब आप देख लो अच्छे से. I'm explaining you right now. And once you come to the lab to perform the experiment, you will do it yourself. Because 4 days I have signed for physics practical. I thought of physics practical for you because Monday से 12th वो practical lab में लेके ही आना है मुझे. And so accordingly the setups were done. बेटा इसका भी निकालो. ये भी लोड लगा के चले गए हैं. लोड निकाल दो. पूरा हैंगर निकाल दो. Load should never be. Ma'am, is this the sonometer? Yes, beta. This is sonometer experiment. Actually, हमारा positioning ऐसा है इसका. Otherwise, sonometer में क्या होता है? होल्स होते हैं. कुछ दिख रहा है? अच्छा कैमरा से देखो. Yes, ma'am. देखो इसको कैसे दिखा. One hole is here, another hole is here. Yes. So now, this is the load. These are the wedges. These are the wedges, and from here we will let the wire go through the pulley. Pulley पे डालो इसको. एक हाथ से नहीं होगा. And then we will put the hanger, and the hanger itself is of कितना weight है एक hanger का? देखो लिखा. ओ hanger नहीं होता weight. One weight is how much? Ma'am, half kg. हम तो half kg बोले. देखना भी पड़ेगा ना. थोड़ा और ऊपर लेके जाओ कि यहाँ से ले लो. It is mentioned there. 1 by 2. 1 by 2. I know that, but you should know कि कितना आप लगा रहे हो. Here it is mentioned. So this is half kg weight. So we have given 2 tuning forks on which its frequency is written. What is the frequency? 480 hertz. That tuning fork is of 480 hertz. And this tuning fork is of 512 hertz. So इसको कैसे रखें? हाथ में पकड़ के तो काम चलेगा नहीं ना. That is a problem. इसको बैटरी एक बार आप पकड़िए. Ma'am, you are not audible clearly. Mask है ना. I can't remove my mask also. How the use of your mask and this. Being exhausting the mask and speaking continuously for 1 hour plus. But I'm trying my level best to speak louder. So out here, we have आपको सुन रहे हैं सुन रहेगा. And we will keep the weight constant. So what we will do is check the resonant wave. We will bang it for the rubber cut. It on the stem of the tuning fork will be put on this. यहाँ भी रख सकते हो. You can see the paper moving very close. You can see the paper vibrating. That means vibration in the wire are pretty fast. Good. So अगर हम इनका resonance level increase करते हैं, let us see. We will try to see where the best position of not much, but it's not moving much.
thermometer. So we would like to look for the resonance condition, that is a condition where the paper will value maximum. इसलिए जितना नहीं लिखा पहले कंडीशन हमने रीडिंग तो लिया नहीं पहले वाला, let us see. So this is how you keep trying for the thing. And then what is the trial? Oh wow, that is a great. Have you seen the paper flying away? Yes, ma'am. So Yes, ma'am. So this position is resonant position. So we were trying it with, हम किससे कर रहे थे? 480 से कर रहे थे. Now अब लिखोगे वहां पे, तो ले लो पेपर, ले लो, रफ नोटबुक है ना आपके पास, रफ नोटबुक लेके आओ. So that is how we have to perform the experiment. Yes, Rough, ma'am. rough. You have to mention, write down new 480 hertz and length, अब resonant length हम दोनों wedges का difference ले सकते हैं यहाँ पे. अब ये देखो बेटा कितना है, what is the length, ऊपर से ले लें 52, यहाँ पर 52 and this is 63. तो कितना हो गया? 63 minus 52 कितना होगा difference? 11. 11 सेंटीमीटर. ठीक है, तो इसके आगे रेजोनेंट लेंथ 11 सेंटीमीटर. ठीक है, समझ आ गया? नाउ पुट द पेपर and then we will like to find out resonant length with 512. ये तो इसका हो गया ना, रेजोनेंट लेंथ इसकी होगी, दोनों का डिफरेंस जो आया ये है ना डिस्टेंस, ये दोनों वेजेस के बीच का जो गैप है, दैट इज कॉल्ड रेजोनेंट लेंथ. अब हम क्या करेंगे, 512 का तो हो गया. नाउ वी विल डू विद 480. पेपर वापस लगाओ एंड नाउ यू विल डू इट. वेट हमने कितना फिक्स रखा है वो भी आपको मेंशन करना पड़ेगा. T इज इक्वल टू mg इज इक्वल टू हाफ kg का हैंगर था, तो वेट that is tension in the string, T is equal to mg, that is 1.5 kg. राइट, अब आप क्या करोगे, अब आप 512 वाला लो टीनी को, अब आप बैंक करो, उसके उठाओ, रबर पैड हाथ में उठाओ. हाँ, ध्यान से, आराम से, कुछ नहीं हो रहा है. तो अब आप क्या करोगे, इनको थोड़ा पास में लेके आ जाओ. यू हैव टू ट्रायल एंड एरर मेथड है और कुछ नहीं. हाँ, इसी जोर से इसके ऊपर, पैड के ऊपर हिट हार्ड, वहां पे रखते टाइम आराम से रखो. वाओ, गुड 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 गुड, वेरी नाइस. मूव तो कर रहे हैं अच्छे से, थोड़ा सा पास में लाके देख लेते हैं, शायद इट विल फ्लाई अवे अगेन. कम हो गया ना पहले से, इतने में तो वाइब्रेशन डाई डाउन हो जाता है, तो लिटिल फास्ट. मतलब हाँ, ये बेटा ये तो मैथ से कर रही है काम, नहीं ज्यादा नहीं हो रहा है, तो पहले थोड़ा ग्रिप करना है इससे. चलो अब देखो करके कितना होता है. इट इज बेटर, आप इसे करो. वेरी गुड, थोड़ा सा इंक्रीज करके देख लेते हैं. अब देखो कम हो गया, कम हो गया ना, पहले ठीक था. तो बेटा फिर करते रहो, ये लास्ट वाले को ट्राई करते हैं. Oh, beautiful. Did you see what was happening? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मेरा हाथ अब पेन होना शुरू हो गया. अच्छा क्लैपिंग यार, मेरा हैंड, माय हैंड इज पेनिंग नाउ. जस्ट अरे लेट मी कीप इट हियर. 2 मिनट फोन पकड़ा. तो इससे Ma'am, what is the tension? 1.5 kg. Tension is 1.5 kg. So now tension I have already written 1.5 kg. So you have new one कितना था इसमें, 480 hertz. L1 कितना था, 11 centimeter. This is first reading. Second reading is new 2, कितना लिया, 512 hertz.
एंड L2 कितना आया, देखो इनका दोनों का डिफरेंस कितना है, ये वाला 38.5, ठीक है 47.5, दोनों एक ही बात है, डिफरेंस 47.5 and 38.5, 47.5 and 38.5, कितना डिफरेंस आ गया 9, बोलो बच्चों। Yes, ma'am. 9 centimeter. 9 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें ये आ गया 9 सेंटीमीटर, बट हमें प्रूव ये करना है न्यू इंटू एल इज कांस्टेंट, so you will find out nu into L for this, nu1 L1, and you will find out nu into L2. Then the reading should come calculation के बाद, ठीक है। आपकी बहुत अच्छी रीडिंग आ गई है, गुड। नाउ ऐसे करते हैं, इधर आते हैं, मेरा फोन का बैटरी इज अबाउट टू फिनिश, तो चार्जिंग पे लगाना पड़ेगा, एंड देन आई कैन कीप इट with me throughout. Yes, ma'am. It's visible clearly. Yes, ma'am. This is we are performing in which you have to find out your speed of sound. So this is open when as soon as it will be in water, one side will be closed, the other side closed, and then it will become closed at order 5. So what we are इसको नीचे तक टच नहीं करना है, थोड़ा ऊपर रखेंगे, इसको टाइट कर देंगे। तो can somebody please tell me this surface, not the water surface, that water is inside the equals in here, तो इसमें air का वॉल्यूम कितना बचेगा, this light whatever is outside the water, क्योंकि आप white कलर भी पानी है, water is inside the pipe also up to this height, तो air वॉल्यूम कितना होगा इसके पास, हम इसे करेंगे you need to measure with the help of from the same, I'm telling you, air volume is 18 centimeters. We have to look at the measure and as a message. We need to look for this is a gap. That's the reason we say this is gap. And comparative data, that's the some we have to keep it this way. So we would like to make the A formula as 70. Maximum. Can you hear the sound? नहीं, आपको आवाज आवाज नहीं आ सुन रही। सकते हैं। Yes, ma'am. Little bit. अरे पैरों
That's the maximum. Yes, ma'am. So, so this is first experiment. This is your second experiment. Second experiment मतलब speed of sound है. आप देख रहे हैं ना experiment. इसमें resonant length कितना है? देखो measure करो फिर से speed से होता है. अंदर वाला separation होता है. तो कोई काम का length हमने नहीं लिया. सेकंड वाला लो नहीं इसकी ये जो है फर्स्ट रेजोनेंट लेंथ है इसका सेकंड रेजोनेंट लेंथ है सेकंड क्योंकि वेयर द एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम वी गेट द रेजोनेंस ये फर्स्ट कंडीशन है यहाँ पे रेजोनेंस एंड इट गोज और देन 5 सेकंड रेजोनेंस उस इनमें क्या होता है वन इज टू थ्री इज 1:3:5 ये रेशियो होता है तो हमारा जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी का है जो रेजोनेंट लेंथ आया है सिर्फ L1 L2 L3 चलता है इट इज 17.5 now we will keep shifting it we want to go for the second interval position second interval position निकालना है उसके लिए क्या करेंगे हम डिफरेंट लेंथ से को डिफरेंट ये get a maximum that is the second अब आप पिक करके This is the best. We check it. But now there was a this is the best one. ठीक है 55 करके नहीं आ सकता बिकॉज़ इसका लेंथ है नहीं 55 का अगर 51 आता है तो ठीक है हाँ कैसे करना है ये वाला तो परफेक्ट है तो 17 थी सी इट हैज कम 3 टाइम्स 1:3:5 अगर पहले वाला रेजोनेंस राइट तो सेकंड वाला इसका 3 से मल्टीप्लाई करो 17 थी ना इसका so now you go with the premise that is force अब बच्चे लोग आप सब लोग देख रहे हो ना कैसे करना है
Now, Yes. now, so you people, when you come to the lab, you should know how to perform it, and हाँ you will do it yourself then. बेटा ऐसे करो. Ma'am, we have to do all the 4 experiments or only one experiment in the practical? एग्जाम में एक करना. इधर ले आओ बेटा. हाँ, मैं यहाँ चार्जिंग पे लगा दूंगी ना. Okay, ma'am. So you have to, in exam you have to do only one experiment, and Ma'am, the easiest one is the resonance tube. हैंगर, पूरा हैंगर से वैसा इसको बाहर निकाल दो, अदरवाइज खराब हो जाएगा. Can you see the apparatus? Yes, बेटा. जी This is how verticals और एक experiment. जाना पड़ेगा. Just a minute बेटा. So this is helical spring का experiment. You can see the spring over here, helical spring, and then Yes, ma'am. a scale over there. Now the scale and the pointer, whether the pointer is at 0, no, 0.5 पे है ना वो. तो जबरदस्ती मत Ma'am, करो. we are not able to see the spring. हम्म, Yes, ma'am. Now. Pointer should be Yes. 0. अगर pointer 0 पे नहीं है तो आप अपना रीडिंग माइनस करते जाओगे सब. I think 0.1 एक्स्ट्रा है इसमें. Yes, ma'am. बस वो कुछ माइनस कर देंगे ना अपना आगे. मान लो कि ऊपर से इतना ब्रोक कर रहे हैं. इस पॉइंट आई थिंक 0.1 एक्स्ट्रा है इसके अंदर. इट्स नॉट एट 0. 0.1. 0.5 यहाँ पर होता है. This 1 is here. Right? 0.5 यहाँ पर है. 0.5 एक तो पहले इसको स्टेबल होना पड़ेगा उसके लिए. 0.5 भी नहीं है, 0.1 भी नहीं है, 0.2, 0.2, 0.3 के करीब है आई थिंक, है ना? 0.3 है. तो सबसे पहले you will write down a table like this. ये टेबल है इसका. ठीक है. At 0 gram you will mark it as 0. या 0.3 करना है तो 0.3 कर सकते हो. There is no load on it, so you can mark it as 0.3 या जो भी करना है. ठीक है. ये तो 0 करो और बाकी सब रीडिंग में से इजी हो जाएगा. नहीं हर बार माइनस करना पड़ेगा इसको. मार्क इट 0 एंड रीडिंग लेते टाइम हर रीडिंग में से 0.3 माइनस करते जाना. देन यू विल कीप हैंगिंग द लोड वन बाय वन. सो पहले हैंगर लगाओ इसके अंदर. ओनली हैंगर. एक एक करके निकालो. सोचो ऊपर वाला निकालो. ओनली हैंगर. देन टेक द रीडिंग. आपको पैरेलक्स एरर आएगा तो इसको सामने खड़े होकर लेना रीडिंग. एक मिनट स्टेबल कर दो थोड़ा सा. हाँ, जस्ट मेक इट स्टेबल. यस, इट इज 1 to 0.7 हो गया ना. 0.3 कम करना पड़ेगा ना उसमें से. तो ये क्या लटका टेबल है? बना लो बच्चे. मेक अ टेबल. अरे तो चार्जिंग ही ऑन ही नहीं किया. हाँ बेटा, सेम टेबल. So how many students are present? 36 students are present. Aditya, Akansha, Anisha, Anlia, Ashwini, Bhumika, Bitsa. Okay.
So I think I am explaining you the experiment. You can see the experiment very well, right? I have already discussed the experiments with you. So now when you come to lab, you can perform your experiment yourself. There's no need of me. I will just Yes, ma'am. watch. I will just watch you guys performing the experiment. Okay, ma'am. तो ध्यान से देखो. So many students are even absent. So many of you are absent even today also. First reading करो शुरू बेटा. It is the table says first is the mass suspended. First is the mass suspended to the spring. बना लो अपने टेबल बना लो आप साइड बाय साइड. Mass suspended to the spring. Second one is F is equal to mg. अब ग्राम फोर्स में करना है और यू मल्टीप्लाइड विद 980. ठीक है. Then reading of the scale, loading and unloading. And then mean x1 plus x2 by 2 and extension x minus x naught. That is mass suspended to the spring. सबसे पहले हमने no mass suspended, that means 0. तो हमने इसको 0 ही लिया. वैसे इसमें जो था 0.3 का एरर था, बट हमने इसको 0 माना है, तो हम हर रीडिंग में से 0.3 माइनस करते जाएंगे, नहीं तो आपको कैलकुलेशन में हर बार माइनस करना पड़ता है. Then we will increase the load and we will keep taking the readings. And then x naught, everybody will write down x naught as 0. x naught is 0 because जो extension होता है, extension is x. बेटा पेन लेना. Extension is, this is mean x is equal to, the extension is x minus x naught. Mean जो extension आएगी उसमें से x naught को आप minus करोगे, because extension means that how much extension length has increased when the load is been put on the spring from the initial position. कितना मतलब starting point से कितना extension हुआ है हर load के साथ में. क्या reading आ गया बेटा, लिख लिया आपने? Then you have to plot a graph between f and x. हाँ, this is load. ये 50 grams है, सारा load 50 है. One load is 50 grams. तो 50 grams पे क्या reading होगा इसमें? 0.7 सेंटीमीटर. हाँ. अनलोडिंग अभी नहीं करना है, अभी लोडिंग करते जाओगे पहले आप. तो यही देखना है इसके अंदर, ये सीखना है आपको. पहले लोडिंग होएगी, फिर एक एक करके रिमूव करते जाओगे तो वो अनलोडिंग शुरू हो जाएगा. तो नाउ पुट अनदर लोड. टेबल नहीं हिलता जाएगा, कोई बात नहीं, इसको पकड़ के रखते हैं. चलो आप अगले नेक्स्ट वाला लोड डालो इसके अंदर. तो बस लोडिंग पार्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा. एक बार स्टेबल करो थोड़ा सा, सपोर्ट जल्दी रुकेगा फिर. 2.6 मतलब 2.3 हो गया आपका. 0.3 का वो चल रहा है ना. 2.6 में से 0.3 माइनस कर दो, 2.3 हिलेगा फिर से टेबल. चलो 2.3 सेंटीमीटर फॉर 100 ग्राम्स. ये लोडिंग ही है, लोडिंग है, ये ध्यान रखना है इस बात को. अनदर वन अनदर वन अनदर वन, कीप पुटिंग. सिक्स से ऊपर है ना, तो 5.8 आफ्टर रिड्यूसिंग. पक्का? पता नहीं मेरे को पैरेलल की प्रॉब्लम क्या है. स्टैंड रीडिंग विल बी डिफरेंट. ये 6.1 कहाँ से आ गया बेटा? 6 तो यहाँ पर है. तो नंबर्स उन्होंने ऊपर लिखे हैं, नंबर्स उन्होंने ऊपर लिखे हैं. 6 यहाँ पर है, ये 6 से ऊपर ही है. इतना भी पैरेलक्स नहीं है मेरा नीचे करने से. 5.6 आई थिंक होना चाहिए अभी. एंड यू विल रिमूव 0.3 फ्रॉम हियर. 5.3. हाँ समझ गई मैं. वो नंबर्स मिडिल में लिखा उन्होंने, ऑन टॉप लिखा है, ना कि सामने. यस यस, कीप एडिंग ना. जितनी जल्दी करोगे तो आपको एक्चुअली बहुत जल्दी तीनों प्रैक्टिकल हो गए. एट 8.9 के करीब है मुझे लगता है ना. 8.9 मतलब 8.6. वेट ऑल्सो कीप राइटिंग साइड बाय साइड.
50 ग्राम ऐड हो रहा है ना हर बार। 200 हो चुका, 250 पे आ गए हो आप। हाँ, नो लोड नहीं है, वो सिर्फ मास है सबसे पहले वाला जो कॉलम है। तो लोड होगा उसमें मल्टीप्लाई करके एरो लगा देता ना यार, मल्टीप्लाई जी से करोगे तो वो लोड हो जाएगा, दिस इज मास ओनली ना। जी से मल्टीप्लाई, देन यू मल्टीप्लाई विद जी, देन यू विल गेट द लोड। 12 means 11.7, राइट। अब आएगा अनलोडिंग वाला काम। अब वेट वेट वेट, अनलोडिंग में क्या करना है, आपने 250 ग्राम तक कर लिया इसको, यू हैव डन टिल 250 ग्राम्स। 250 ग्राम्स में कितना आया आपका, 12 आया ना, 11.7, 11.7 आया। तो अब व्हेन यू आर डूइंग अनलोडिंग तो आपको रिवर्स ऑर्डर में ही चलना है। तो सबसे पहले वाला आप क्लास वाला रीडिंग लिखोगे, सबसे एंड वाला 250 के सामने ही अनलोडिंग में आएगा, तो सेम 250 वाले में जाओ, लोड कहाँ, इधर लेके आओ, नोटबुक इधर लेके आओ, शो मी योर नोटबुक। 0, 50, 100, 150, 200 and 250। ओके, नाउ अनलोडिंग के टाइम पे 250 है हमारे पास, तो ये हो जाएगा 11.7 ही रहेगा। 250 पे 11.7 है, नाउ रिमूव वन लोड। यस, एंड टेल मी द रीडिंग। 8.9 और माइनस 0.3, 8.6 हो गया ना, क्यों आ गया 8.6। अब तो हम अब रिवर्स, अब 200 था, अब कितना रह जाएगा लोड, 150 mg रह गया। तो हम रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे, इसमें रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। आर यू गेटिंग गाइस, इधर ऑनलाइन वाले बच्चे? Yes, ma'am. कितना आएगा, -3 करके, पॉइंट करके 5.3। नाउ लोड कितना हो जाएगा, एक और निकाल दोगे आप, तो लोड रह जाएगा 100 ग्राम्स। समझ में आ रहा है हेल्विन? See, for one student I have changed, I'm performing the practicals with one student. It's okay, not sorry, you should not say sorry, it's good you have come. I took this decision yesterday कि अकेला बच्चा है तो लैब में नहीं जाएंगे, no, when I said that we will be doing practicals and you have come, that's a 2.6 और 2.3 हो जाएगा माइनस करने के बाद। तो क्या बाकी है, one more slot is there, और हैंगर हैंगर रह जाएगा, हैंगर itself is of 50 grams। वन से कम है, आफ्टर -0.3 है ना, ऐसे 1.8 के करीब लग रहा है मुझे इस टाइम, 0.8 और 0.7 है, कुछ ऐसा है ना, आप देखो सामने से। ओके, ऐसे कैसे हो गया, बड़ा डिफरेंस आ गया। हाउ कम इट वाज 1.7, द रीडिंग रिटन 0.7, फिर इसमें इसका मतलब 0.3 माइनस में क्या था, अरे ओ तो यार it will be
ये है फोर्स, इन्होंने मास में खींचा, द ग्राफ प्लॉटेड ओवर हियर इज mass suspended in the spring and extension. We don't have to plot a graph between mass and this thing. We have to plot a graph between force, that is m into g लगाते जाना इसके साथ में. G is basically 9.980 dyne, and out here you can write down G is equal to 980 dyne per centimeter square. So it is with G. मास के साथ लिखिए F and L का बीच में, क्योंकि we have to plot a graph between F and L. So as you can see, slope will be F in the on the x-axis, L is on y-axis, but we have to find out F upon L. Because force constant is F upon L. So F is on x-axis, L is on y-axis. So you will take any 2 points you can take. It's not compulsory कि first और last वाला point ही आपको लेना है. You can take any 2 points, and then you can find out the slope. That's it. And you will find out value of K from the graph. So we have finished 3 experiments. It is 9:44. We are left with one experiment of Newton's law of cooling. Newton's law of cooling itself required 30 minutes. वो हमने आज नहीं लगाया है जानबूझ के कि because it is not possible. At least we have finished 3 experiments. Now you please place it backward. यहाँ से उठाया था. The same place. Alvin, you can sit here and do the calculation of other 2 experiments which we have done. New L constant जो सबसे पहले वाला हमने किया है experiment, that one सोनोमीटर वाला, nu1 L1 nu2 L2 उनको मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट देयर वैल्यू. फर्स्ट एक्सपेरिमेंट उसमें हमने nu1 L1 निकाला हुआ है ना, तो व्हाट वी हैव टू लुक फॉर न्यू L कांस्टेंट. तो nu1 L1 को मल्टीप्लाई करो and nu2 L2 मल्टीप्लाई करो, and then both the values should come same. So children, now you can ask your doubts or anything else you want to say. Yes, children. No, Nothing? ma'am. Okay. When we do the practical, that time we'll mostly having doubts. Right now, it's like we saw everything. It seems easy. And term 1 practicals, here you had zero error, positive zero error. That तो was आसान था. very easy, ma'am. Easy में ये है कि performing it is easier, but viva and theory is slightly difficult. God. Viva and theory will be difficult. New into L multiply कर लो. यहाँ भी कर सकते हो. मैं लेफ्ट इस पे कराती था. और इधर लिखो कैलकुलेटर यूज करते हैं. What is new? पहले वाली कंडीशन में क्या था? ये था ना new 480. देखते हैं ना आंसर ठीक आता है. मल्टीप्लाई with 11 5280. वहाँ पे लिख लो ना इसके आगे 5280 new 1 L1. यहाँ पे तो लिखा हुआ ही है 5280. And the second frequency is 512 and resonant length was how much? कितना? 9 centimeter multiplied with 9. 4608. 4608. कितना डिफरेंस आया था? मैंने काफी डिफरेंस है. डिफरेंस होना चाहिए आ गया 5280 4608. We are not काफी डिफरेंस है. Actually it has to be constant, means both the readings should come same. पर हमारे साथ दोनों केसेस में तो पेपर फ्री हो गए ना, तो हमारी रीडिंग सेम आनी चाहिए दोनों की. नाउ व्हाट कैन बी डन? 600. तो हम क्या कर सकते थे इसमें? आपका एक लॉजिक लगाने की बात करिए. तो ये है कि इफ अगर हमारे फर्स्ट वाला जो था 5280 आया था, एंड वी नो न्यू एल इज कांस्टेंट. न्यू एल कांस्टेंट है, इज इक्वल टू न्यू टू 512 हमने बाद में लगाया था इनटू L2. तो हम इससे L2 की वैल्यू निकाल सकते हैं. Am I right?
New L for the first set is this one. New 1 L1 is equal to new 2 L2 since new L is a constant. तो जो न्यू एल एक वाले से आया है उसको हम न्यू टू L2 का हम गेस कर सकते हैं इससे हाउ मच L2 शुड बी. तो 5280 डिवाइडेड बाय 512 10.3 अगर हमारे पास हम रख के देखते हैं इसमें सेकंड वाले केस में इफ वी हैव केप्ट द लेंथ रेजोनेंट लेंथ वेजिस के बीच का डिस्टेंस एज 10.3 तो चांसेस थे कि हमारा शायद वो भी रेजोनेंट पॉइंट आता. तो नाउ वी हैव अ डिफरेंस ऑफ 5280 4608 काफी डिफरेंस है दोनों में. तो अभी थोड़ा सा यू कैन राइट डाउन दिस एज L2. वो थिंग्स विल कम सेम. थोड़ा बहुत डिफरेंस चल जाता है लाइक 5280 एंड 5280 5200 लास्ट के 2 डिजिट्स का डिफरेंस होता तो चल जाता. This can also work क्योंकि थोड़ा सा maybe there may be some experimental error, but the best result would have been if both the values were same. पर हमारे तो दोनों केसेस में पेपर फ्लू अवे, so it was the best reading actually. So it is we cannot say approximately constant कह सकते हैं इसको. It is not completely constant. It's not completely constant. So 600 का डिफरेंस है, 672 का डिफरेंस है ना. Okay, children, I'm leaving the class now. ठीक है? Because I have also to go to next. Okay, ma'am. अच्छा अभी तो ब्रेक हो गया ना. ब्रेक टाइम हो जाएगा 10 o'clock 10 to 10:20 Yes. will be. So I have already discussed all the practicals, 3 practicals with you, and once you will come to lab and start performing the experiment, then only you will come to know क्या क्या मिस्टेक्स है या कैसे होगा. जब तक अपने आप से नहीं करोगे समझ में नहीं आता है. ठीक है ना बेटा. चलो ओके. थैंक यू चिल्ड्रन. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, mom.